Welcome to this series of learning of artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Up till now, we have seen supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, how machines can learn, how algorithms can be trained. But the basic fact which is required for all these things is the data. The data which we get from different sources is an enormous amount of data which comes in different formats. So, what is required is data pre-processing. So, let us see today what is data pre-processing, what are the factors which are need to be concerned, what are different ways in which we can play with the data. So, we have data exploration. The first terminology which comes in our mind is data exploration. What do you mean by data exploration? Data exploration means just to explore the data. Once you were a small kid, you must have played a game with the jigsaw puzzle. तो हम क्या करते थे जिक्सॉ पजल को? देखते थे, एनालाइज करते थे कि यार कैसे उन पजल्स को जोड़ के कुछ एक मीनिंगफुल चीज बनाए. द सेम थिंग गोज विद डेटा एक्सप्लोरेशन, कि कैसे डेटा को एनालाइज करा जाए, कैसे डेटा को हमने देखा, एक्सप्लोर करा और उसे एनालाइज करा कि इस डेटा से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये डेटा किस टाइप का है, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, इसको कैसे इम्प्रूव करा जाता है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, so that we can do the correct analysis if there is some biasness in the data. So to analysis of this data is known as data exploration, so that we can find out that क्या क्या क्वेश्चंस इस डेटा से हम निकाल सकते हैं. So data exploration gives us most useful variables. There are different variables in a data. For example, हम किसी क्लास की डेटा का इकट्ठा कर रहे हैं, किसी क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. तो उसके उसमें उनका नेम आ रहा है, एज आ रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और हमें चाहिए कि भाई टॉपर्स कौन है, कौन टॉप 20% है, उनका एड्रेस आ रहा है. तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि उसका एड्रेस या उनका सेक्स, जो हमारे पास कोई जिसकी ज़रूरत ही नहीं है. तो इस वजह से हम उस डेटा को, उस वेरिएबल को नहीं इंक्लूड करेंगे. सो by exploring the data we can come to know that what are the most useful variables. We can remove इनकन्सिस्टेंसीज. बाय सीइंग द डेटा हमें पता चल जाएगा कि यार ये फील्ड तो इनकन्सिस्टेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, या कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उस मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज नहीं गिवन है किसी सेमेस्टर की, तो ये मिसिंग वैल्यू है और इम्पॉर्टेंट है, तो उस वैल्यू को हम ढूंढेंगे, पता करेंगे और फिल करेंगे. अदरवाइज अगर उसका एज मिसिंग है, ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं उस मिसिंग वैल्यूज़ को. सो दीज आर द टेक्निक्स विच वी यूज़ फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन, एंड दीज आर द थिंग्स which data exploration gives us. Now, data exploration is all about exploring the data. It helps in taking the right decisions to analyze the data. Visualizations are used to analyze the data. Statistics techniques like mean, median, mode, they are used so that we can work on those data, and correlation between the variables helps in it. That is there any relationship between different variables? So this is what we call as data exploration. Now there is another term which comes into the picture which is known as data profiling. What is this data profiling? In data profiling, we deals with the particular variables which are given into the data, and we examine these variables and we see what are the characteristics and profile properties of those variables. Now, data profiling aids in understanding various attributes, structure, and the overall quality of the data. So data profiling is the first step in data exploration, you can say, where you examine the variables, you gain the characteristics of the variables, you come to know about the properties of the variables. Now, when we move ahead, we correlate between different data. What is this correlation? Correlation means कि is there any relationship between two variables? For example, if someone is purchasing a bread, there is a relationship with butter. If there is rainfall, then there is a relationship with raincoat and umbrella. So this is correlation. Correlations are linearly related. Remember this thing, that correlations are always there for linear relationships. So this is all we are doing in data explorations. Now, visualizing of the data. Definitely, visualizations makes the things simpler.
फॉर एग्जाम्पल यू आर विजुअलाइजिंग दिस वीडियो, सिंपल ऑडियो से ज़्यादा अच्छा किस में लगता है, ज़्यादा अच्छा समझ में कब आता है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस रखते हैं, जब हम विजुअलाइजेशंस करते हैं. तो व्हेन वी विजुअलाइज द डेटा, when we show the data in the form of a graph, in the form of a table, then certain relationships which are not very easy to find out, they becomes easier to find out. So visualizations helps us in finding the relationships between different variables between within the data. There are other advantages of data visualizations. For example, it enhances the storytelling. It gives us the clear picture of the data. It improves in feature selection. What features should be selected to analyze the data? Is it a useful feature? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेम, एज, सेक्स. उसमें सेक्स इमेटीरियल है, तो हम उस फीचर सिलेक्शन को इम्प्रूव इंक्लूड ही नहीं करेंगे. तो हमें विजुअलाइजेशन से पता चल जाता है. कोई सा डेटा इरेलीवेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बहुत कम वैल्यूज हैं, वी कैन रिमूव दैट वेरिएबल फ्रॉम द selection for analyzing the data. Then it helps us in making informed decision making, interactive exploration, rapid comprehension. So it has got various advantages. Data visualizations में अपनी एक अलग advantages मिल जाती हैं. Now when we move forward, the term which comes into the picture is data pre-processing. हमारे पास एक रॉ डाटा आ गया है, उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे. डेटा एक्सप्लोरेशन वी आर डूइंग without any technique, just analyzing the data, just exploring the data. The technical parts comes into the picture from data pre-processing. So data exploration and data pre-processing are complementary to each other. Data exploration helps us to understand the data, what is the problem in the data, and it helps us in formulating the pre-processing strategy which we have found in data exploration. The pre-processing moves in four parts. The first part is cleaning of data. Cleaning of data में हम क्या करते हैं? In cleaning of data, we remove the errors in the data. For example, हमने डेटा कलेक्ट करा स्टूडेंट्स का, जिसमें हमें पता करना था कि भाई टॉप 10% कौन से हैं. अब उस डेटा में परसेंटेज अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई मिल गई, तो वो एरर था. सो वी रिमूव दोज एरर्स. हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज कम्स अंडर क्लीनिंग ऑफ द डेटा. मिसिंग वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैंने कहा परसेंटेज लिखी नहीं है, तो हम उसे रिमूव ऐड करेंगे. कोई ऐसी मिसिंग वैल्यूज है जो इररेलीवेंट है, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे अपनी एनालिसिस में. कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं डेटा में, है ना, कोई इनकंसिस्टेंसी मिल रही है, फॉर एग्जांपल उस की एज, हमने कहा भाई स्टूडेंट की एज जो है 18 से 24 होनी चाहिए, पर उसमें जो एज आ रही है वो 5 साल का आ रहा है और बीटेक का डेटा है, तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो उस डेटा को करेक्ट करेंगे या रिमूव करेंगे. सो दीज ऑल फैक्टर्स कम्स अंडर डेटा क्लीनिंग. नाउ सेकंड स्टेप इन डेटा प्री प्रोसेसिंग इज डेटा इंटीग्रेशन. व्हाट इज दिस इन डेटा इंटीग्रेशन? जरूरी नहीं है कि हमने एक ही डेटा सोर्स से डेटा लिया हो. डेटा कैन कम टू अस फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्स. So combining these multiple data sources into a consistent data set is known as data integration. So this is an important factor in data pre-processing. After data pre-processing, what do we have with us is data ट्रांसफॉर्मेशन. अब डेटा हमारे पास आ गया है, कंसिस्टेंट डेटा सेट हमारे पास बन गया है, पर उसे हमें एक यूजेबल फॉर्म में बनाना है. नाउ टू मेक दैट डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्म मींस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम कलेक्टिंग डेटा ऑफ डिफरेंट students, we were saying, now let's take an example that we are collecting data of different students of different weight. Now different students have given their weight in different format. किसी ने पौंड में बताया, किसी ने किलोग्राम में बताया, किसी ने ग्राम में बनाया बताया. तो उसको हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट में सबके वेट्स को रख देंगे, सो दैट वी कैन एनालाइज द डेटा. हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज नोन एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. And the last step of data pre-processing is, we can see that it is feature engineering. Feature engineering means selecting the right features. Whatever features are needed for data analysis, we select only those features, which gives us, saves our time, which helps us in getting the accurate results. Irrelevant features को include नहीं करते, so that is known as feature engineering.
So data pre-processing, my friends, my students, is an important step in machine learning, is an important step in artificial intelligence, is an important step in deep learning. Whatever we are doing, data pre-processing is a crucial step for accurate results. So keep on enjoying the videos, keep on learning artificial intelligence, and we hope that these videos will be helpful for you. Thank you.